study with Apala Engineering and General Geology Parvin Singh book. Chapter 8 we study पहले ही हम पढ़ चुके हैं ओरिजिन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स. तो आज है कि वंस अ जियोसिंक्लाइन इज फॉर्म्ड द प्रोसेस ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स बिकम्स समवॉट सिंप्लीफाइड. फर्दर एक्यूमुलेशंस एंड डिपोजिशन ऑफ द लाइटर क्रिस्टल मटेरियल इनटू द बेसन. ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है जियोसिंक्लाइन प्रोसेस के ज़रिए वो क्रिस्टल मटेरियल है नीचे बेसन में बैठ जाता है अकम्पेन्ड बाय ग्रेजुअल सिंकिंग. और नीचे को जब जाता है तो उसे सिंकिंग कहते हैं. अंडर इट्स ऑन लोड टेक द रूट ऑफ द अल्टीमेट माउंटेन स्टिल डीपर इनटू द प्लास्टिक लेयर ऑफ द कॉन्टिनेंट. बट वंस द कन्वेक्शन करंट डाइज आउट इन द एरियाज एज दे would eventually do comes to an end. At that point of the times accumulated materials in the geosinclines which might have been highly folded and contorted during its downwards movement pull starts rising up in the forms of the mountain. So जब downwards जा रहा है pull हो रहा है तो start the form of mountain. This process of uplift of the contorted and folded mass will continue till it attains an equilibrium with the surrounding plastic substratum. So mountain building process indicate materials by arrow up and down, pull and push. This cold current in center and this hot current. कोल्ड करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, हॉट करंट हीट हमेशा ऊपर को जाती है. दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन इन अ कन्विक्शंस मैनर्स द periodicity of organic revolution. Thus during the circulations of convection current, चूँकि मुझे हिंदी से इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्ट करने में दिक्कत हो रही है, इसे प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. Thus during the circulations of convection current, a stage could be said to have been reached when currents at the lower region become cold. Lower region में cold जा रही and all the hot currents are at the base of the crust. At this stage no further circulations of the current, और कोई circulation नहीं होता एक स्टेज में जाकर के, would be possible. In other words, a particular building's activities comes to an end. Presence of radioactive materials within the earth is supposed to be one of the source of supply of necessary heat for these current for a long period. Drift hypothesis. According to this hypothesis propounded by Taylor and Wagner, ये scientist हैं, इन्होंने दी है drift hypothesis. The outer crust of the earth was a single unit in the earliest geological times. This is named as हाँ, एक बात मैं कहना चाह रही थी आप लोगों से कि अगर आप लोग कंपटीशन में हैं, B.Sc कर रहे हैं, M.Sc कर रहे हैं, तो आप तुरंत ही अपने कंपटीशन के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप की जो बुकें आती हैं वो लें, जिसमें से मैंने अपने टाइम में सईद की बुक ली थी, वो मुझे बहुत हेल्प की थी. और सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, हर चाहे आप गेट दें, चाहे नेट दें या अदर किसी कंपटीशन में है जो सब्जेक्ट ये जियो है रिलेटेड उससे. ठीक है. दिस सुपर कॉन्टिनेंट वॉज द ब्रोकन इनटू ब्लॉक्स और फ्रेगमेंट्स ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रिफ्टिंग. And individual crystals blocks thus formed began to move away or drift apart under the influence chiefly of the tidal force over a much viscous and hot substratum that is assumed to lie below the crust. During this movement, great friction is supposed to have developed because of different densities and conditions of the moving blocks and the substratum. Because of this friction force we study in physics class, the hypothesis suggests the frontal edge of the blocks were thrown into buckles or mountains. This hypothesis is in its original
forms is also open to serious objections, most important of which is inadequate explanations about the source of force responsible for causing the rift and drift. Tidal forces are definitely quite insufficient to produce such effect. Recently, however, as we shall see, the drift hypothesis has received tremendous support in a modified forms, and the concept of a plate tectonic discussed below is at best and modified and much detailed versions of the hypothesis of continental drift. प्लेट टेक्टोनिक्स एंड माउंटेन बिल्डिंग्स. अब प्लेट टेक्टोनिक के जरिए एक तो हाइड्रोथीसिस के जरिए हो रहा था, एक प्लेट टेक्टोनिक्स के जरिए हो रहा माउंटेन बिल्डिंग्स. सिंस 1965 द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक हैज़ गेन्ड firms ground in explains many important problems of physics, geology, including mountain buildings, foldings, faulting, seismicity, and volcanism. The concept of plate tectonic is based primarily on seismological evidence supports by geomagnetism. मैं आप सारे स्टूडेंट से ये एक और बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा हिंदी के पीछे मत भागिए. आप चाहे 2-3 बार या 4-5 बार जितनी बार आप सुनना चाहते हैं वीडियो देखिए और सुनिए. आपके पास बुक ऑलरेडी होगी. अगर आप ज़्यादा हिंदी की तरफ भागेंगे तो सारे एग्ज़ाम जो कि इंग्लिश में कंडक्ट कराए जाते हैं वो आपको आगे दिक्कत करेंगे. फिर आप एक बार हिंदी उसमें देखेंगे, एक बार इंग्लिश देखेंगे तो कन्फ्यूज़न रहेगा, वो टाइम टेकन रहेगा. इसलिए आप साइलेंटली एक बार सुनते जाइए और देखते जाइए. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा करिए, उसे समझिए और फिर आपको खुद अपने आप हिंदी में आंसर मिलेंगे. वो आपका माइंड ही खुद सॉल्व करेगा उसको. इसलिए प्लीज़ try to first of all in English. In the orogeny mountain building activity, many different condition of collisions are possible. So thus the collisions may occur between two oceanic plates, the oceanic and one continental plate, two continental plates. The concept of plate tectonic is relatively so fresh in geology. It has yet to gather substantial data to calm universal disputed acceptance. At the same time, it has reduced the significance of the other prepositions on mountain buildings to mere hypothesis of historical interest only. Further discussion on plate tectonic is reserved for the next articles 8.3 in figure. Thank you.